Stylus. Good morning, everyone. Uh, First of all, best wishes for all the students who are going to write the CDS and NDA examinations. Pardon me. Best of luck from abhigyanacademy. Uh, Today we will be doing a few PYQs from general science, which broadly consists of physics, chemistry, biology. I have around 10, 11 questions each from all the three subjects. Uh, the questions that I want to discuss today, they are very fundamental and application based of whatever theoretical syllabus that you studied in these subjects. And frankly speaking, nowadays UPSC goes more into the application rather than the theoretical part. Now, let's start with the questions. Please look at the questions carefully because UPSC has habit of asking questions of these particular topics and types over the past 2-3 years, and I am hoping that they will be continuing to do so. If you take care of these questions, if you look at these questions carefully and have a good idea of how to go ahead, then you should be able to ace the science part in your exam. Okay, so let's start. This question. Now look at this question. The first question. It says the value of small g is 0 at which of the following options? All right. Now what is small g? Small g basically means the acceleration due to gravity. Okay. Say this is the Earth, and Earth has a particular gravitational pull, right? Earth has a particular gravitational pull. Now, say you drop a body from the sky on the Earth. The Earth will pull the particular body towards itself due to its gravitational pull. Okay? And when this body will be falling, जब ये body गिरेगा, तो इसके body में एक acceleration होगा. अभी मान लीजिए इस पेन को मैंने ऐसे छोड़ दिया. So when I left it till it fell on my hand, it had a certain acceleration. Its velocity was increasing while it was falling down, isn't it? So why is it gaining this acceleration? इसमें acceleration आ क्यों रहा है? इसका speed बढ़ क्यों रहा है? इसका speed बढ़ रहा है क्यों? Because Earth is pulling it with its gravitational pull. Now, for Earth's case, due to Earth's gravitational pull, whatever acceleration is created, that is denoted by the letter small g, and it is known as acceleration due to gravity. For Earth, the value of g is constant. It is 9.8 meter per second square. Okay. Now, they are asking us that at what point, at which place the value of g will become 0. The value of this acceleration will become 0. The body will not accelerate anymore. That is what they are asking. Now, if we look at the law of gravitation, the equation of gravitational force, what does it say? Say there are two bodies, okay, whose mass are capital M and small m respectively. Okay, and there is a distance between them. Now listen, the distance between two bodies while calculating the force, the distance is not taken like this. The distance is not taken like this, okay? Not from surface to surface. The distance is taken from the center of the bodies.
from the center of both the bodies, and say the distance is r. Okay, say the distance is r. This whole thing. So the law of gravitation is that gravitational force will be g into mm by r square. Now what is g? G is the gravitational constant. The value of g is 6.66 into 10 to the power minus 11. Okay. Now let's come to small g. In case of small g, we are talking about, say there is earth, okay, and there is a certain object here, okay, which is getting attracted towards the earth for its gravitational pull. Now this is the distance between that particular object, the center of that particular object, to the center of the earth, okay, which is nothing but, we can denote it as r. Say earth's mass is capital M, the body's mass is small m. Now what will we get? F equal to gmm by r square. Okay. Now we know from Newton's second law that F equal to ma, mass into acceleration. Okay. So the force on this particular object can be written as m. In this case, the acceleration which I said, that the Earth's acceleration due to gravity is written as small g. So in this case, the a acceleration will be equal to small g. A will be equal to small g. Because of this, what we can write, that F equal to mg into is equal to g mm by r square. Okay. Now what does this become? This becomes, we bring this m down here, cancel, cancel, then what do we get? We get small g equal to gm by r square. Now this is the formula for small g. This is how you calculate small g, acceleration due to gravity. Now let's see at what value, at which point this g will become 0. Now look at this equation further ahead. G equal to gm by r square. Okay. Now let's do one thing. Let us multiply both sides with a variable v. V is nothing but the volume. Okay. G equal to g into v equal to gm r square into v. Okay. This is what we get. Now let's bring this v down here. Okay. The volume, let's bring the volume down here. What do we get? G equal to gm. This is what we get, right? Now
Look at this particular thing. M by V, mass by volume. What is mass by volume? Mass by volume is nothing but the density. Density is denoted by something known as rho. Okay? This is density. Now, what do we get after further simplification? What we get after further simplification, this is what we got, Gm V V R square. Sorry. Now look at this thing. What we, after bringing the G down here, we get that M by V is nothing but the density of Earth, because the volume that we're taking here is the volume of the Earth. ठीक है? Now हमें क्या मिल रहा है? If density is denoted as rho, what we are getting is G is equal to gravitational constant into rho into volume by R square. Now see, regarding volume, this particular V, regarding volume, Earth is a sphere. We all know that. Okay? Not a perfect sphere, but near about a sphere. So what is the volume of the Earth? The volume of the Earth can be written as volume of a sphere. The formula is 4 by 3 pi r cube, right? 4 by 3 pi r cube. Now, what we need to do is that just replace V with this formula. G is equal to अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? We can cancel this r square with r cube. ठीक है? R cube by r square. The powers will get subtracted and we will be left with only 1 r. So what are we getting in the end? What we are getting in the end is G is equal to gravitational constant into density pi r 4 by 3. Okay, this is the value that we are getting here. ये वैल्यू हमको मिला है. ठीक है? Now see, here the density of Earth rho cannot be 0. This cannot be 0. The gravitational constant is not 0. The value of gravitational constant I told you is 6.66 into 10 to the power minus 11. ठीक है? Pi का value we all know, 3.14 or 22 by 7, whatever you take it. And we have 4 and 3. These are numbers. So out of here, in order to make the small g as 0, यहाँ पे किसी एक वेरिएबल का वैल्यू 0 होना पड़ेगा ताकि इनटू करने के बाद द होल थिंग कम्स एज 0. अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 0 हो नहीं सकता. दैट इज 6.66 into 10 to the power minus 11. Rho is the density of the earth. Of course, density of the earth cannot become 0. अर्थ खोखला तो है नहीं. Then we have pi. Pi का भी एक वैल्यू है. When 4 and 3 are normal natural numbers. Now, the only value that can be 0 is the distance or r. ठीक है? अभी ये 0 कब होगा? That will be 0. We are taking the distance. Say there is a body here. ये body अगर अर्थ के सरफेस पे भी है, we know that we are taking the distance from the center of the body to the center of the earth. ठीक है? अभी अगर ये बॉडी, इसका डिस्टेंस 0 कब होगा? When will it be 0? It will be 0 only when the body will be standing at the center of the earth. अर्थ के बीच में यहाँ ओवरलैप होकर जब खड़ा रहेगा, at that time the distance of r will be 0. So इसका आंसर हमें क्या मिल रहा है? When will be the value of g be 0? The value of g will be 0 at option B, the center of the earth. And this was the mathematical derivation for this. What I would suggest is that whenever I am doing these numericals or
any kind of derivations or any kind of mathematical concepts, please pause the video or watch the video at lower speed than 1x and try to understand, then go ahead. और अगर कुछ भी दिक्कत हो, then please rewind the video again and understand the concept 2 times, 3 times, as many times as you want to get it cleared up in your mind. The next question, this is a very easy question. Look at it. A flow of 1.2 ampere due to 3.6 volts potential difference produces the resistance of what value? Which of the following? Now see, we have current I equal to 1.2 ampere. We have voltage V is equal to 3.6 volts. What we need to find out is the resistance R. Okay? Now, by Ohm's law, we know that V equal to IR. This is the formula. V equal to IR. Please, 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 one thing I am telling everyone before the exams, please be thorough with your formulas. And the only way to be thorough with your formulas is to practice. Please practice the sums. Whatever I am doing, please look at them thoroughly, then go and practice them yourself. Only then you will be able to do it properly and carefully. Okay, V equal to IR. Now place the values. V is 3.6. 1.2 into R. All right. Now, what we need to do here is that बस variable का value निकाल लो. R equal to 3.6 by 1.2. ठीक है. 3.6 by 1.2 is 3. So the value of resistance is 3 ohm. Okay. This particular symbol. This symbol is a Greek symbol. It's called omega. This symbol is used to denote ohm. Ohm is what? Ohm is the unit of resistance. Ohm is the unit of measurement for resistance. And how is ohm denominated? Ohm can be ohm either तुमको एग्जाम में ऐसा just OHM बोल के भी लिख सकते हैं, ठीक है, यूनिट में, or it can be written like omega with this symbol omega. So please don't get confused. This particular symbol means ohm. ठीक है. So the correct answer is option A, 3 ohm. This is your calculation for the same. Okay, now here the question is which equation is wrong in the following. Okay. See, by looking at the question, we know that they are asking us about the equations of motion. Okay. Now there are 3 equations of motion. Okay. What are these equations? First is V equal to U plus AT. Okay. Second is S equal to UT plus half AT square. Okay. And the third one is V square minus U square equal to 2AS. Now, what are the variables here? ये जो variables इतनी यूज की V, U, AT सब है क्या? See, V is the final velocity of an object. ठीक है? U is the initial velocity of the object. ठीक है? मतलब मान लो कि मैं किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी को स्टडी कर रहा हूं, तो एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टडी, शुरुआत में उसका वेलोसिटी कितना था, एंड व्हेन आई कंक्लूडेड, जो लास्ट रीडिंग लिया मैंने, उस टाइम उसका फाइनल वेलोसिटी कितना था, दैट इज द फाइनल वेलोसिटी, और शुरू में जो लिया था दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है. नाउ एस एस इज नथिंग बट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड. ठीक है. ए इज द एक्सीलरेशन. ठीक है. एंड
t is the time taken. ये जितने भी टाइम में ये इसने वेलोसिटी इंक्रीज किया इनिशियल से फाइनल, या इसने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर किया या फिर एक्सीलरेट किया, दैट टाइम इज डिनोटेड बाय. नाउ दे आर आस्किंग यू व्हिच इक्वेशन इज रॉन्ग इन द फॉलोइंग. s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये तो करेक्ट है, दिस करेक्ट. देन v इक्वल टू u प्लस at, दिस इज आल्सो करेक्ट. v square minus u square equal to 2as, this is also correct. Now automatically last option will only be wrong. Or what is the last option? v equal to u plus as. No, we do not have any equation known as v equal to u plus as. v equal to u plus as बोल के कोई हमारे पास इक्वेशन नहीं है. दिस इज रॉन्ग. और हमसे पूछा था कि which option is wrong, which equation is the wrong equation in this whole scenario. The correct answer is option D. Now the next question. There's a particular body, it starts from rest and acquires a velocity of 4 meter per second after a displacement of magnitude 4 meters. Then what is its acceleration? Then what is its acceleration? That is what they are asking. Now look here. See. यहाँ बोला है कि you have एक पर्टिकुलर बॉडी है, वो रेस्ट में था, उसका वेलोसिटी 0 था. ठीक है, इट डिड नॉट हैव एनी वेलोसिटी इन इट्स बॉडी. ठीक है, उसके बाद उसने एक्सेलरेट करना शुरू किया है. उसके बाद उसने एक्सेलरेट करना शुरू किया है, और एक्सेलरेट करने के बाद थोड़े टाइम तक एक्सेलरेट करने के बाद इसका वेलोसिटी हो गया है 4 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, और 4 मीटर पर सेकेंड इसका वेलोसिटी कब हुआ? इसने एक डिस्टेंस कवर किया. एक डिस्टेंस कवर किया, कितना? 4 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है. ठीक है, 4 मीटर का डिस्टेंस कवर करते करते इसने जीरो वेलोसिटी से गेन किया है 4 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी. ठीक है, तो अब पूछा है कि इसने एक्सेलरेट कितना किया. ठीक है, इसने एक्सेलरेट कितना किया. नाउ लेट्स लुक एट कि इसने एक्सेलरेट किया कितना. लेट्स सी. सी, we know v equal to distance by time, v equal to s by t, velocity equal to distance by time. Now what is the velocity? It is 4 meter per second square. ठीक है, what is the distance? It is 4 meters. ठीक है, टाइम हमें नहीं मालूम. नाउ सी, देखो हम यहां से डायरेक्टली भी एक्सीलरेशन निकाल नहीं सकते. वी नीड मोर टाइम फॉर दिस. सी, v इक्वल टू एस बाई टी, वैल्यूज डाल दो. v का वैल्यू इज 4, द वैल्यू ऑफ v इज 4 इक्वल टू 4 meters, द वैल्यू ऑफ s इज 4 डिवाइडेड बाय t, टाइम. ठीक है, तो हमें टाइम का वैल्यू क्या मिलेगा? 1 सेकेंड. ठीक है, we get the value of time, 4 को यहाँ नीचे ले आओ, t को ऊपर ले जाओ टाइम को, we get the value of time as 4 by 4, 1 second. ठीक है, मतलब 1 सेकंड में इसने एक्सीलरेट कर दिया 0 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड. ओके, नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर? हमें टाइम मिल गया है और वेलोसिटी हमारे पास ऑलरेडी है. ठीक है, नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्सीलरेशन? हमसे एक्सीलरेशन पूछा है ना, हमसे एक्सीलरेशन पूछा है. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्सीलरेशन? What is the formula for acceleration? The formula for acceleration is acceleration equal to velocity by time. ठीक है, velocity हमारा क्या है? 4, टाइम क्या है? 1 सेकेंड. acceleration कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, ओके, you got the answer. Acceleration is 4 meter per second square. The correct answer is option D.
There is another way to do this sum. See, the body starts from rest and then the body acquires a velocity of 4 meter per second. ठीक है, इसका मतलब हमारे पास दो वेलोसिटी है. We have a velocity in the beginning when we are taking the reading of the situation, and we have a velocity at the end when we are concluding the whole situation. ठीक है, so what we can say, the initial value is, initial velocity u is 0, final velocity v is 4. ठीक है, and we have the distance s. ठीक है, which is 4. Okay, now we read about a formula, right? V square minus u square equal to 2as. हमारे पास v है, हमारे पास u है, हमारे पास s भी है. ठीक है, we need to find out a. We can just put the values and find out the value of a. This is something which I would like you all to do on your own. और मैंने बता दिया है कैसे करना है. इस फॉर्मूला में ये वैल्यूज को बिठाओ and find out the value of acceleration. Now, the next question. When we mix sugar in hot milk, then the hot milk becomes cold because of which of the following reasons? ठीक है, now see, why is the milk hot? The milk is hot because it has heat present in it. It is excessively heated. Heat है उसके अंदर इसीलिए hot है वो. ठीक है, okay. Now see, heat has a tendency. Heat का एक characteristic है. अब heat का characteristic क्या है? See, say there are two bodies. Say there are two bodies A and B. This is A. This is B. B को मैं A के कांटेक्ट में लेके आ गया. ठीक है, मान लो B को मैं A के कांटेक्ट में लेके आ गया. Now A is a warm body. It's a very hot body. इसमें बहुत हीट है. A में हीट बहुत ज्यादा है. And B is a cooler body than A. ठीक है, B में हीट A से कम है. ठीक है, तो हीट का टेंडेंसी क्या होता है कि हीट always tends to move from a hotter body to a cooler body. मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है कि अगर एक बॉडी है जो कंपैरेटिवली ज्यादा गर्म है और एक बॉडी है जो उससे कंपैरिजन में थोड़ा ठंडा है या फिर बहुत ठंडा है उससे कंपैरिजन में, उसको अगर मैं उस गर्म बॉडी से कांटेक्ट में लगा दूं, इफ आई पुट इट इन कांटेक्ट विद द वार्मर बॉडी, व्हाट हैपेंस इज दैट हीट हैज अ हैबिट कि जहां में गर्मी ज्यादा है वहां से निकल के वो कम गर्मी वाले जगह पे चला जाता है. इट मूव्स फ्रॉम a place of higher temperature to a place of lower temperature. ओके, अभी क्या है देखो, जो शुगर हमने मिल्क में डाला, ठीक है, शुगर तो हमने शुगर के डब्बे से निकाला होगा. ठीक है, और मिल्क को हमने किया होगा बॉयल, इसलिए वो हॉट है, गर्म है, हीट है उसमें. तो ऑफ कोर्स द टेम्परेचर ऑफ शुगर विल बी लेसर देन दैट ऑफ द मिल्क. शुगर मिल्क से ज्यादा ठंडा होगा टेम्परेचर में. इट विल बी लेस हॉटर, लेस वार्मर, लेस हीट इन द शुगर. ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, शुगर जैसे मैं दूध में मिला रहा हूं, द शुगर इज कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द मिल्क. ठीक है, एंड मिल्क एज वी नो इज द हॉटर बॉडी हियर, शुगर इज द कूलर बॉडी हियर. ठीक है, एंड एज सुन एज अ हॉटर बॉडी इज कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कूलर बॉडी, द हीट विल टेंड टू मूव फ्रॉम द हॉटर बॉडी टू द कूलर बॉडी. और उसके रिजल्ट से क्या होगा, अगर एक बॉडी ऑलरेडी गर्म है, दूसरा बॉडी ठंडा है, दोनों को मैं लगा देता हूँ, जोड़ देता हूँ साथ में, तो उससे क्या हो रहा है, जैसे ही गर्म बॉडी से गर्मी निकल के ठंडे बॉडी में चला जाएगा, जो बॉडी पहले गर्म था वो भी ठंडा पड़ जाएगा ना, वो पहले से कम गर्म हो जाएगा अभी. ठीक है, सो व्हाट विल हैपन, अगर मैं शुगर को मिलाऊंगा, शुगर मिल्क से ठंडा है, मिल्क का हीट शुगर में चला गया, ट्रांसफर हो गया. व्हाई, बिकॉज हीट मूव्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. उससे होगा क्या,
उससे मिल्क का टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा। क्यों? बिकॉज सम ऑफ द हीट हैज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मिल्क टू द शुगर। सो द करेक्ट आंसर क्या है? व्हाट विल हैपन हियर? शुगर विल, इसका रीजन क्या है? व्हाई डज द मिल्क बिकम कोल्ड देन? द मिल्क बिकम्स कोल्ड बिकॉज ऑप्शन सी, sugar absorbs heat from the milk. Why? Because sugar was colder than milk. Sugar had a lower temperature than milk. Now the next question, ये तो बहुत easy है। Myopia, a defect of eye, can be corrected by which of these lenses? Myopia क्या है? Myopia is C। Myopia जो होता है उसमें आपको दिक्कत ये आती है कि you are short sighted। Myopia is nothing but short sightedness। Why? Because you can only see things which are at a shorter distance from you। दूर की चीजें नहीं दिखाई देती। ठीक है? Myopia में you get a minus power in your eye। So which lens can be used to treat myopia? The answer is option B, concave lens। Concave lenses are used to treat myopia। हाँ, see, look at this diagram here। ये जो image form हो रहा है हमारे आंखों के अंदर, image that is being formed here, we know that image is formed at the focal length, right? Image हमेशा focus पे form होता है lens से। Okay? Now हमारा इमेज कहाँ फॉर्म होता है? आंख के पीछे जो स्क्रीन है हमारा, the screen that we have behind the eyes which is connected to the optic nerves here, उस पर्टिकुलर स्क्रीन पे इमेज फॉर्म होना पड़ेगा। ठीक है? बट यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी the eye becomes a bit elongated। ठीक है? और इलोंगेशन की वजह से क्या होता है, जो फोकल लेंथ है ना वो स्क्रीन से थोड़ा सामने आ जाता है। बिकॉज ऑफ विच व्हाट हैपेंस, इफ द ऑब्जेक्ट इज फार अवे, if the object is far away from our eyes, then the image is not formed on the screen, the image is formed a bit front of the screen। उससे क्या होता है, हमें धुंधला दिखता है, we are not able to see the image of the object clearly। ठीक है? now अभी हो क्या रहा है? now what is happening here is that this thing is known as near sightedness। why near sightedness? क्योंकि I can see things which are near to me but I cannot see things which are far away from me। now what is done here is that a concave lens is given to us in the form of these spectacles। a concave lens is given to us। वो concave lens क्या करता है, वो फोकस को शिफ्ट कर देगा। फोकस को शिफ्ट करके इट विल पुट द फोकस बैक ऑन द स्क्रीन बिहाइंड आवर आईज। ठीक है? ताकि इट कैन बी डिटेक्टेड बाय द ऑप्टिक नर्व्स एंड टेकन टू द ब्रेन। ठीक है? एंड विद दिस वी कैन easily see what is near us also and what is far away from us। ठीक है? so myopia or short sightedness or near sightedness, whatever you call it, is a defect where a person cannot see things। उसको दूर की चीजें दिखाई नहीं देती है। क्यों? क्योंकि उसका जो फोकल लेंथ है इमेज फॉर्मेशन का, वो आंख के पीछे के स्क्रीन के सामने आ जाता है। तो वो फोकस वहां पे कर नहीं पाता, इमेज उसको दिखता नहीं है। बट द फोकस कैन बी शिफ्टेड। हाउ? द फोकस कैन बी शिफ्टेड बाय यूजिंग अ कनकेव लेंस इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्टिकल्स or contact lenses, whatever, and by this the focus can be shifted back to the screen and we can easily see whatever is far away from us as well। ठीक है? now let's look at the next question। it's a numerical from optics। where should an object 4 centimeter long be placed before a concave mirror of 12 centimeter focal length so that a 1 centimeter long image of it is formed? ठीक है? बेसिकली यहाँ पे हमें करना क्या है, देखो, we have been given the size of the image। ठीक है? कि ये पर्टिकुलर साइज का इमेज मुझे चाहिए। साइज ऑफ द इमेज हमें कितना चाहिए? साइज ऑफ द इमेज इज डिनोटेड बाय आई। ठीक है? साइज ऑफ द इमेज हमें चाहिए 1 सेंटीमीटर का। ओके? अदर देन दैट हमें ये बोला है कि ऑब्जेक्ट का साइज हमारे पास कितना है? साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट कैपिटल O इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है?
size of the image is 4 centimeter. Now अभी तुम हमसे ये पूछा है कि what will be the distance from the focus so that you get a 1 centimeter long. अब यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, देखो फोकल लेंथ भी दे दिया है तुमको. फोकल लेंथ इज small f, focal length is given as 12 centimeter. Now what is focal length? Focal length, मान लो ये प्लेन है एक, इस पे एक कनकेव मिरर रखा हुआ है, ठीक है. दिस इज अ कनकेव मिरर, ओके, दिस इज अ कनकेव मिरर, ठीक है. दिस इज नोन एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है. दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है. अब इससे फोकस का, मान लो यहाँ पे फोकस है कैपिटल एफ, वी हैव अ पॉइंट कॉल्ड द फोकस, जहां पे इमेज फॉर्म होगा, ठीक है. अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस का जो डिस्टेंस है, इसको कहा जाता है, स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है, इसको कहते हैं फोकल लेंथ, ठीक है. दिस इज द फोकल लेंथ. नाउ वी हैव बीन टोल्ड कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, ठीक है. मान लो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, उसको रख दिया है कहीं पे. उस ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है? 4 सेंटीमीटर है उसका हाइट. एक ऑब्जेक्ट है, मान लो एक ऑब्जेक्ट है, उसका हाइट कितना है ऑब्जेक्ट का? ऑब्जेक्ट का हाइट है 4 सेंटीमीटर, और बोला है कि इस फोकल लेंथ का डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर, ओके. अब पूछ रहा है कि इस ऑब्जेक्ट को, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रखना कहाँ है. देखो ये ऑब्जेक्ट हमें रखा है ना यहाँ पे. ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये हमें निकालने बोला है y. ये डिस्टेंस ऐसा होना पड़ेगा so that when the image is formed, when the image is formed, say an image is formed here, the image should be 1 centimeter in its size, ठीक है. तो ये निकालेंगे कैसे, देखो. For a mirror we have the formula for magnification. For a concave mirror, the formula for magnification small m is image size by object size, ठीक है. Other than this, we have another formula for magnification of a concave mirror, which is magnification equal to minus v by u. अभी कंफ्यूज मत कर लेना v by u को इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी से, ठीक है. यहाँ पे I क्या है? I is image size, O is object size, ठीक है. V is image distance, V is image distance. Distance from what? The distance of image from the center of curvature which I showed you in the diagram, ठीक है. And U is object distance, ठीक है. U is object distance. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, उस पर्टिकुलर मिरर से ऑब्जेक्ट को कितना दूर रखा है, और V का मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से या फिर उस पर्टिकुलर मिरर से वो इमेज कितना दूर पे फॉर्म हुआ है, ठीक है. और I और O होता है कि इमेज कितना बड़ा है, साइज कितना है उसका, और ऑब्जेक्ट खुद कितना बड़ा है, उसका साइज कितना, ठीक है. सो नाउ इफ यू लुक हियर, magnification is equal to I by O, magnification is equal to minus V by U also. So what can we write? We can say that I by O equal to minus V by U, ठीक है. I हमें क्या दिया है क्वेश्चन में? I is the image size. Image size in the question is 1 centimeter, ठीक है. 1 by ऑब्जेक्ट साइज क्या दिया है? 4 सेंटीमीटर बाई 1 by 4 इक्वल टू माइनस V by U, ठीक है. 1 by 4 इक्वल टू माइनस V by U, ठीक है. अभी
वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू, है ना? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू? सी, व्हाट वी कैन गेट फ्रॉम हियर इज दैट यू को अगर मैं यहां ऊपर ले जाऊं, क्रॉस कर देना है, u इक्वल टू माइनस वी बाई, ठीक है? नाउ लुक हियर, वी नीड टू फाइंड आउट दिस पर्टिकुलर थिंग u, which is the ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है? हमें u निकालना है यहाँ पे। अब u निकलेगा कैसे? देखो, ये हमको फॉर्मूला मिल गया है, why? because magnification is equal to I by O also and magnification is equal to minus V by U also, ठीक है? इतना क्लियर है? अभी देखो, what we need to do here is that yeah, so from here we need to take certain values and put it in the mirror formula. अब मिरर फॉर्मूला क्या है? देखो, फॉर अ कनकेव मिरर, एक कनकेव मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला क्या होता है? मिरर फॉर्मूला इज गिवन एज 1 बाई बी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ, ठीक है? 1 बाई बी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ, ठीक है? दिस इज नथिंग बट द मिरर फॉर्मूला, ठीक है? अभी व्हाट वी नीड टू डू हियर इज दैट इस मिरर फॉर्मूला में हमको वैल्यूज को बिठाना है सो दैट वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ यू। हमारे पास ऑलरेडी एफ का वैल्यू तो है ही, ठीक है? अभी देखो, इसको सेम वेरिएबल में लेके आते हैं। लुक हियर, यू को इधर ले गया हमें, माइनस वी इक्वल टू यू बाई 4, ठीक है? माइनस को इधर ले जाओ, v इक्वल टू माइनस यू बाई 4, ठीक है? हमें ये v का वैल्यू मिला एक, v इक्वल टू माइनस यू बाई 4, ये इक्वेशन को सॉल्व करके, ठीक है? अभी टेक अ नोट ऑफ दिस वैल्यू, इतना तक नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन टिल हियर। आफ्टर दिस मिरर फॉर्मूला लिखते हैं, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ, ठीक है? अब यहाँ पे करना क्या है, v का वैल्यू हमें क्या मिला था? 1 बाई माइनस यू बाई 4 प्लस दिस इज 1 बाई यू इक्वल टू, and the value of f focal length is 12, it is already given in the question, ठीक है? अभी यहाँ पे करना क्या है, we just need to solve for the value of u, ठीक है? we just need to solve for the value of u। चलो सॉल्व करते हैं। ये उल्टा हो जाएगा, 1 बाई माइनस यू बाई 4 उल्टा होके ये हो जाएगा माइनस 4 बाई यू रेसिप्रोकल प्लस 1 बाई यू इक्वल टू, ठीक है? देन वी नीड टू ऐड दिस अप,
ठीक है, u इज द कॉमन डिनोमिनेटर हियर, u को कॉमन डिनोमिनेटर लिया, प्लस -4 + 1 -3, -3 by u इक्वल टू 1/12, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस व्हाट डू वी गेट हियर, 12 को ऊपर लेके जाना है, u इधर जाएगा, u इक्वल टू 12 into -3 which you will get as -36 सेंटीमीटर। अभी देखो, ये क्वेश्चन में एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। द प्रिंटिंग मिस्टेक इज दैट ये वाला जो ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर्स, आई हैव चेक द सॉल्यूशन आल्सो, डोंट वरी अबाउट इट, आई हैव चेक द सॉल्यूशन ऑन द बैक ऑफ द बुक, the answer is coming as -36 centimeters only. There's a printing mistake here. The answer for this question is at what distance the object should be पूछा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारा u होता है, u हमारा निकला है -36 सेंटीमीटर, द आंसर इज 36 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट डज -36 सेंटीमीटर मीन, व्हाट डज -36 सेंटीमीटर मीन हियर, लेंथ नेगेटिव में क्यों आया, सी -36 सेंटीमीटर मीन्स नथिंग बट दिस, मान लो ये मिरर है, ये तुम्हारा कनकेव मिरर है, ठीक है, ठीक है। -36 सेंटीमीटर मीन्स दैट कि अगर ये फोकस है ना, if this is the focus, -36 centimeter means that the object is placed behind the focus. This is in front of the focus. Minus distance for the object means that the object is placed behind the focus. That is why it's coming in minus, nothing else. But the answer is 36 centimeter. This is how you have to do this sum. ठीक है, ये थोड़ा लंबा सम है, कॉम्प्लिकेटेड सम है, प्लीज पॉज इट 2-3 times, go through the method 2-3 times more and don't worry about the answer, there is a mistake here, the answer is 36 centimeter, ठीक है, प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। इसको अच्छे से पॉज करके समझना, बिकॉज देयर आर 2-3 स्टेप्स दैट आई हैव डन हियर, 2-3 formulas I have used here, please go through it carefully and do it again on your own once, ठीक है। Let's look at the next question now. A scooter driver over an oily road generally slips because on the oily road what is happening, ठीक है। Now see, say a person is driving a scooty or a scooter, ठीक है, and is driving over an oily road, मतलब रास्ते पे तेल गिरा हुआ है, there is oil on the road, रास्ते पे ऑयल गिरा हुआ है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसका स्कूटी या स्कूटर स्लिप हो गया। अब इसका कारण क्या है, सी when we are driving on the road, whenever say this is the road, say this is the road, ठीक है, and we are driving a car on the road, sorry for my drawing, but say we are driving a car on the road, होता क्या है, there is a force of friction between the tire and the road, there is a force of friction between the tire and the road, पता है why do the rubber tires that we get, why do they come with those patterns, why are they never plain, they are never plain because जितनी सरफेस जितना प्लेन होगा ना, सरफेस जितना स्मूथ होगा, उतना ही फ्रिक्शन कम होता है, और फ्रिक्शन कम होने से क्या होता है, देयर इज अ रिस्क ऑफ स्लिपिंग, देयर इज अ चांस ऑफ स्लिपिंग, ठीक है। बट अब मान लो कि रास्ते में मैंने तेल लगा दिया, तेल गिरा दिया मैंने रास्ते में, ठीक है। अब तेल से क्या होता है, तेल बेसिकली एक्ट्स एज अ लुब्रिकेंट। व्हाट इज अ लुब्रिकेंट, lubricant is any kind of substance which reduces the amount of friction, ठीक है। फ्रिक्शन अब है क्या, फ्रिक्शन कुछ नहीं है, मान लो आई एम वॉकिंग, तो ये कार इधर जो जा रहा है, द कार इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, तो होगा क्या, ये जो सरफेस पे जा रहा है ना, सरफेस विल गिव एन ऑपोजिट फोर्स इन दिस डायरेक्शन, जो कार को आगे जाने से रोकेगा, दैट इज ओनली कॉल्ड नथिंग बट फ्रिक्शन, ठीक है। अभी होता क्या है, द ऑयल स्टार्ट्स एक्टिंग लाइक अ लुब्रिकेंट, lubricant क्या करता है, lubricant is any kind of substance, the oil here is acting like a lubricant. Now what is a lubricant, lubricant is anything which reduces friction, तो ऑयल यहाँ पे कर क्या रहा है,
ऑयल को रास्ते पे डाल दिया, ऑयल स्टार्ट्स एक्टिंग लाइक अ lubricant on an oily road, एंड उससे क्या होता है, द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन ऑन द रोड स्टार्ट्स टू डिक्रीज। जैसे ही रास्ते में फ्रिक्शन कम होता है, अब व्हाट डिड आई से, अगर फ्रिक्शन कम होगा, सरफेस स्मूथ होगा, तो हमारा स्लिप करने का रिस्क ज्यादा रहेगा, है ना। So that is the reason why whenever the oil is there on the road, whenever oil is acting like a lubricant in this case the friction will get reduced on the road, and because of this the scooty will have a tendency to slip off. So iska correct answer kya hai, why does the scooty driver over an oily road generally slips? Because the friction between the tires and the roads decreases. Option D is the correct answer. Okay, now look at this. Look at this question here. यहाँ पे कहा गया है, there is a ship, ठीक है, the ship is moving at a speed of 56 kilometers per hour, and 1 second later the ship accelerated its speed, and within the next 1 second its speed increased from 56 kilometer per hour, its speed increased from 56 kilometer per hour to 58 kilometers per hour within 1 second, within 1 second, ठीक है। इसने कुछ एक अमाउंट एक्सेलरेट किया है, तो भाई पूछा है कि एक्सेलरेट कितना क्या है, व्हाट अमाउंट डिड एक्सेलरेट, ठीक है। सो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। टाइम तो वी नो, टाइम इज 1 second, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन ओनली, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट वेलोसिटी, वेलोसिटी इज 58 माइनस 56, ठीक है। जो चेंज इन वेलोसिटी है कितना है, 58 माइनस 56, 58 माइनस 56 2 किलोमीटर पर आवर। बट अभी देखो आंसर हमें मीटर पर सेकंड स्क्वायर में चाहिए, टाइम इज इन सेकेंड्स, स्पीड इज इन किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हाउ डू वी डू द कन्वर्जन हियर ना, देखो ऐसे आंसर कभी नहीं आ सकता है, टू फाइंड टू डू अ कैलकुलेशन एवरीथिंग शुड बी इन द सेम यूनिट। आंसर हमें मीटर पर सेकंड स्क्वायर में चाहिए, टाइम भी सेकंड में है, तो वी नीड टू कन्वर्ट दिस किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड, ठीक है। अभी देखो द ट्रिक हियर इज दैट if you want to convert a particular value, say there is a value x, a speed x is given, ठीक है, and you need to convert from kilometer per hour to meter per second, ठीक है। How will you do it? Say there is a speed x given to you and the value of x is given in kilometer per hour and you need to convert it to meter per second. How will you do it? Nothing, you just need to multiply x with 5 by 18, ठीक है। And the reverse, if the value of x is given in meter per second and you need to convert it to kilometer per hour, in that case, if the value of x is given in meter per second and you need to convert it to kilometer per hour, then in that case, you need to multiply x into 18 by 5, ठीक है। तो अभी यहाँ पे होगा क्या, we have the change in velocity 2 kilometer per hour, ठीक है, we need to convert it to meter per second, ठीक है। How will we convert it to meter per second? किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में हम लोगों को कन्वर्ट करना है, कैसे, वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 5 by 18, 2 into 5 by 18, 2 and 18 cancel and we get 5 by 9 meter per second, the velocity or the speed in meter per second. अभी क्या करना है, we need to find acceleration, acceleration equal to change in velocity by time, the change in velocity is 2 kilometer per hour, we converted it to meter per second by multiplying by 5 by 18, the value we got is 5 by 9 meter per second, ठीक है। Now acceleration equal to v by t, what is v, 5 by 9, ठीक है, and t,
It is 1 because the ship accelerated for 1 second is given in the question. Okay? So 5 by 9 by 1, the answer is, what answer do we get? The answer we get is that acceleration equal to 5 by 9 meter per second square. So the correct answer is option A, 5 by 9 meter per second square. Now, the next question is from work, power and energy. Okay? It says, calculate the power of an engine which can lift 300 kgs of water through a vertical height of 15 meter in 15 seconds. ठीक है? अभी देखो, यहाँ पे हमें we have the C, height is given in meters and time is given in seconds and your mass is given in kgs. ठीक है? अगर ये मीटर और सेकंड में है, we cannot take the mass in kgs, we have to take it in grams because kg, kilometer and hour are one set of units, grams, meter and second are one set of units. ठीक है? So now what do we have in the question with us? We have the mass m, mass is 300 kgs. ठीक है? We have the height h, 15 meters. ठीक है? Then we have the time, 15 seconds. ठीक है? Now हमें यहाँ क्या कैलकुलेट करने दिया है? We have been asked to calculate power of the engine. ठीक है? Now power is equal to energy by time. This is the formula of power. Power is equal to energy by time. ठीक है? Now what kind of energy are we using here? When we are lifting something. ठीक है? जब मैंने किसी चीज को जमीन से परपेंडिकुलरली ऐसे उठाया है, ठीक है? Say this is the pen in my hand. I pick up the pen like this, perpendicular to the surface at a vertical height. ठीक है? So the energy which is used here is known as potential energy. ठीक है? ये जो मैंने इसको उठाया, ये उठाने के बाद ये एनर्जी इसमें स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है? So what is the formula for potential energy? The formula for potential energy is m into g into h. m क्या है? m is the mass. मान लो इस पेन का मास अगर m है और मैंने इसको उठाया ऐसे, तो potential energy will be mgh. m will be the mass of the pen, h will be the height or the distance between my hand, the surface and this pen. This is h. And what is g? G is nothing but the acceleration due to gravity. We studied about the acceleration due to gravity, remember, small g. The value of g we know is 9.8 meter per second square. ठीक है? अभी, so now look at this question here. We need to find out the power here. It is very easy. Power equal to weight. Please write this down. Pause the video and write this down. Now see, power equal to energy by time. ठीक है? What is the energy we have here? We have potential energy because the engine is lifting a weight. ठीक है? It is lifting a weight ऐसे ऊपर, so it will be potential energy m g h by t, time. ठीक है? Now we have the value for m.
The value of G is 9.8. The value of H was given as 15. ठीक है? And the time was given as 15 seconds. ठीक है? So we have put the values here. हमें power निकालना है अभी. 15, 15 cancel. ठीक है? What are we left with? We are left with 300 into 9.8. ठीक है? Just multiply 300 into 9.8. Okay, by the way, pardon me. I had told you कि kg को ग्राम में वो करना पड़ सकता है convert, but it is not required here because I confused it with kilometers. अगर किलोमीटर का कोई वैल्यू होता तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता. Why? Because we have the time in seconds. But as of the mass and weight, you can use it in kg. That is not an issue. ठीक है? Now see. 300 into 9.8. Let's calculate the value. 300 into 9.8. 300 into 9.8 is 2940. The answer is option A. The unit of power is joules per second. Why is it joules per second? Because the formula of power is energy by time. The unit for energy is joules. The unit for time is seconds. So as a result of this, the unit of power is joules per second. The answer we got is 2940 joules per second. Option A is the correct answer. Please note it down. Now, enough questions for physics. Let's move to chemistry. The first question is, the atomic weight of an atom is due to which of the following? Okay? See, inside an atom, you have a lot of orbitals which has electrons on it, and in between you have the nucleus. The nucleus has protons and neutrons. Okay? Now see, electrons are very small in size. Their contribution to the weight of the atom is almost negligible. ठीक है? ना के बराबर, ये लोग इतने छोटे हैं. But the center of an atom, the nucleus, is comparatively larger in size to all these electrons combined, because electrons देखो they are scattered in different directions and they are very small. So कोई हो नहीं रहा है contribution इनके weight. But the nucleus is a concentrated mass in between the atom. Atom के बीच में, ठीक है? So nucleus is the only thing which is contributing to the mass or weight of the atom. ठीक है? अभी न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है? न्यूक्लियस के अंदर you have the protons and the neutrons, as I told you just now. So what is contributing to the atomic weight of an atom? Answer is option C, protons and neutrons. The atomic weight of the atom is due to protons and neutrons. Why? Because protons and neutrons are present in the nucleus. The nucleus is the primary and only factor of the atomic weight. Why? Because electrons are scattered in different directions and they are very small in size. That is why there is no proper contribution to weight. On the other hand, at the nucleus is very concentrated mass at the center, and hence nuclear creates the weight of the atom, and nuclear contains the protons and neutrons. Hence, protons and neutrons are contributing to the atomic weight. Now, let's look at the next question. Okay. The next question asks, proton is identical with which of the following? A proton is same as what? What is proton? A proton is nothing but a subatomic particle which has a single positive charge. This is a proton, a single positive charge, say. Okay? Now, what is an ionized hydrogen molecule? Hydrogen molecule क्या है? Hydrogen molecule is
H2. A molecule, not an atom. A hydrogen molecule exists as two hydrogens, right? So two hydrogens. Now, to a ionized hydrogen molecule is somewhat like this, H2 plus. अब H2 plus का मतलब क्या होता है? It has two protons, but यहाँ तो एक ही प्रोटॉन है. So are they same? Are they identical in any manner? They are not. ठीक है? Now, this is wrong. Option A. Nucleus of a light gas or nucleus of a heavy gas you can eliminate just like that. Because a nucleus of a light gas, say helium is a light gas. The nucleus of helium has two protons. ठीक है? Nucleus of helium has two protons. और ये तो एक प्रोटॉन अकेला है. So it is not same as the nucleus of a light gas also. This is also wrong. Nucleus of a heavy gas. Heavy gas, say oxygen. Oxygen ka nucleus also does not have one proton, it has more than one protons. So it is not the identical as the nucleus of a heavy gas also. This is also wrong. Now, nucleus of a hydrogen atom. Nucleus of an hydrogen atom. Nucleus of an hydrogen atom has a proton, a single proton, positive charge. ठीक है? And it has a neutron as well. But neutron का charge तो zero होता है, neutral है वो. तो what is the charge on the nucleus of an hydrogen atom? The nucleus of an hydrogen atom has a single positive charge, just like a single proton which has a single positive charge. ठीक है? So what we can say is that, excuse me. So what we can say is that a single proton is identical as the nucleus of an hydrogen atom. Why? Because a hydrogen atom's nucleus has one proton and gives it one single positive charge, which is same as one single proton which has a single positive charge. So the correct answer is option B, nucleus of an hydrogen atom. Now, this is a very easy question. Natural gas is primarily composed of what? Which means natural gas, ठीक है, उसको हम लोग बहुत चीजों के लिए यूज करते हैं. We use it for fossil fuel. It's a kind of fossil fuel. Natural gas is used for many fueling purposes. ठीक है? तो अब नेचुरल गैस में सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? Which thing has the maximum composition in the natural gas is composed of many gases. Oxygen, carbon dioxide, butane, octane, methane, propane, बहुत कुछ होता है नेचुरल गैस में. बट सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या होता है? The correct answer is a very easy question. The correct answer is D, methane. Methane is the primary component of natural gas. Natural gas में सबसे ज्यादा अमाउंट में मीथेन ही होता है. ठीक है? Look at this diagram. This natural gas पाई चार्ट है कंपोजिशन का. ठीक है? इसमें से मीथेन देखो CH4 मीथेन is 70 to 90% composition of the natural gas. इतना ज्यादा है, almost मीथेन ही है natural gas. And the rest composition is other gases like ethane, propane, butane, carbon dioxide, nitrogen, oxygen, hydrogen sulfide, so on and so forth. So the correct answer is methane is the primary component, or natural gas is primarily composed of methane. ठीक है? Now 18 karat gold contains what percentage of gold? See, what is pure gold? Pure gold or 100% gold. Pure gold or 100% gold is 24 karat gold. We all know that. ठीक है? So what percentage purity gold 18 karat gold has? ठीक है? So इसको निकालते कैसे है? तुमको जितना कैरेट दिया है, ठीक है, जितना कैरेट का तुमको प्योरिटी निकालने दिया है उतना कैरेट लो, डिवाइडेड बाय द प्योर
divided by the pure gold's carat which is 24, ठीक है, and multiply it by 100. तुमको उतने कैरेट गोल्ड का प्योरिटी मिल जाएगा। यहाँ देखो प्योर गोल्ड का कैरेट कितना है, 24 कैरेट, ठीक है। 24 कैरेट is the measure of gold in pure gold which is almost 100%, and we have been asked to find out कि 18 कैरेट गोल्ड में कितना परसेंट सोना होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिंस यहाँ पे 18 कैरेट का पूछा है, हमें 18 को लेना है, लेके 24 से डिवाइड कर देना है विच इज दी कैरेट इन प्योर गोल्ड एंड मल्टीप्लाई इट बाय 100, ठीक है। कैंसिल कर दो, 3/4 75% gold. Correct answer is option C, 75% gold. And this is something that you should, everyone should know, so that, see, whenever you go to a jewelry shop to buy gold, ठीक है, the shopkeepers, what sometimes they do is that they can put on any rate of gold on you, कुछ भी बता देंगे। So उस टाइम क्या करना होता है, you should be self aware as a consumer also whenever you're going to buy gold. So what you have to do is that when you go to buy gold, you have to know कि on that particular day and in your city what is the price of 24 karat gold, ठीक है। And say you went to the shopkeeper and you told him कि I want to buy 18 karat gold, ठीक है। Now 18 karat gold means that the price, so the purity of gold will be 75%, ठीक है। So तुम्हें क्या करना है कि 24 कैरेट का पर ग्राम का जो प्राइस है, मान लो 24 कैरेट पर ग्राम का प्राइस उस दिन 100 रुपए है, से इतना कम तो होगा नहीं बट मान लेते हैं 100 रुपए, और तुमको 18 कैरेट खरीदना है 1 ग्राम मान लो, तो 18 कैरेट इज 75% गोल्ड। सो व्हाट यू हैव टू डू इज दैट यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द 75% ऑफ द 24 कैरेट प्राइस। 24 कैरेट का प्राइस उस दिन अगर 100 रुपए था, 18 कैरेट का प्राइस ऑन दैट डे विल बी 75% ऑफ 100 which is 75 rupees, ठीक है। And the making charge and all they will take different from you, separate from you, but that is how you find it out. Please take care of that. If you ever go to a shop, please make sure of this particular calculations. And 18 कैरेट गोल्ड कितना है वैसे, it is 75% gold. How? जितना कैरेट का निकालने दिया है उसको लो, divided by the pure gold's carat which is 24 and multiply by 100, percentage निकल जाएगा। In case of 18 कैरेट the purity of gold is 75%, ठीक है। सी, सेफ्टी मैच, जो मैच बॉक्स होता है ना, वी लाइट द मैच बॉक्स, ठीक है। अब मैच बॉक्स जो बॉक्स होता है, ऑन द एज ऑफ द बॉक्सेस, ठीक है, वेर यू स्ट्राइक द मैच, वहां पे केमिकल क्या है, दैट इज व्हाट इज आस्क्ड हियर, ठीक है। So the correct answer is red phosphorus. The correct answer is red phosphorus. Safety match has red phosphorus. ठीक है? I'll show you on the next. I'll show you on the next slide. Wait. See, this is the matchstick. एक wooden splint है, लकड़ी का टुकड़ा है. On that you have the chemical head. What does it have? It has potassium chlorate and glass powder. ठीक है? And some other small chemicals as well. But in more number it has potassium chlorate and glass powder. अभी इसको लेके क्या करता है, इसको लेके you strike it on the match box. अब होता क्या है, this particular thing it mainly reacts with the red phosphorus and ignites a flame. Red phosphorus is used on the side of these match boxes जहां पे आप matchstick को घिसते हैं. So the correct answer for this question is red phosphorus. Safety match contains red phosphorus. Now, this we have discussed before. Nucleus of an atom consists of what? Nucleus of an atom consists of option B, protons and neurons. Electrons are outside, inside the atom, but they are outside the nucleus. I'll show you in the diagram in the next page. See, this is the interior of an atom. These round things, these are the orbitals, and on the orbitals, the electrons are rotating. Okay? These are the electrons. See, it's labeled. These are the electrons. ठीक है, अभी
At the center of the atom, we have the nucleus. We have the nucleus, and within the nucleus, inside the nucleus, we have the protons and the neutrons. Okay? All the three things, proton, neutron, electron, are inside the atom only, but electrons are outside the nucleus. They are rotating, so they are revolving in the orbitals. Meanwhile, the protons and neutrons, they are present inside the nucleus. Okay? They are present inside the nucleus. और हमारा क्वेश्चन क्या था कि व्हाट डज द न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ? द न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. द आंसर इज ऑप्शन बी. ठीक है. अभी यहाँ पे एक रिएक्शन दिया गया है तुमको. ठीक है. नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, दे आर यूजिंग अ कैटलिस्ट. व्हाट इज अ कैटलिस्ट? अ कैटलिस्ट इज नथिंग बट समथिंग व्हिच इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ द रिएक्शन. एक रिएक्शन है, मान लो द रिएक्शन टेक्स 10 मिनट्स टू अकर, उसमें कैटलिस्ट डाल दिया 10 मिनट्स की जगह, इट विल नाउ टेक सम 2-3 मिनट्स टू टेक प्लेस. ठीक है. एंड इट इज फॉर्मिंग अमोनिया. अभी पूछा है या ब्रैकेट में वी हैव MO. व्हाट इज MO? MO इज मोलिब्डेनम. ठीक है. पूछा है कि व्हाट इज द रोल ऑफ मोलिब्डेनम इन दिस रिएक्शन. देखो अभी अगर कभी भी यू गेट एन इक्वेशन लाइक दिस and you see that there is a catalyst here. यहाँ पे catalyst कौन है? Catalyst is iron. Fe, iron. It is the catalyst. What does it mean? It is fastening up. It is speeding up the speed of the reaction. ठीक है. अगर catalyst के बगल में ब्रैकेट में मोलिब्डेनम लिखा है, ठीक है, या फिर कुछ भी लिखा है, वो ब्रैकेट का चीज is nothing but something known as a catalytic promoter or a catalyst promoter. What does a catalyst promoter mean? It means that it helps the catalyst to fasten up the reaction even further. मतलब आयरन तो उसका स्पीड 10 मिनट से कम करके मान लो 3 मिनट पे ले आया, बट 3 मिनट तक लाने के लिए आयरन को इस मोलिब्डेनम ने ही प्रमोट किया, इसको हेल्प किया टू फास्टन अप द रिएक्शन इवन फर्दर. ठीक है. सो इन एनी काइंड ऑफ रिएक्शन, ठीक है, मान लो कैटलिस्ट के बगल में ब्रैकेट में कोई चीज लिखा है, that thing is always a catalytic promoter. What is a catalytic promoter? It helps the catalyst in its action to fasten up the reaction. So in this case, the correct answer is that in this reaction, molybdenum is acting as option D, a catalytic promoter. Now, what is the bond between potassium in potassium chloride called? ठीक है. This potassium chloride. ठीक है. Potassium has an extra electron. Chlorine on the other hand is deficient of 1 electron. ठीक है. तो पोटेशियम क्या करता है? पोटेशियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है. It donates 1 electron to chlorine. As a result, potassium loses an electron. It gains a plus charge, single plus charge. Chlorine gains an electron, 1 extra electron. So it will get 1 minus charge. Am I clear? Am I clear, everyone? ठीक है. Now, या हो क्या रहा है? देखो, there is a proper opposite polar charge that is being formed here in potassium and chlorine. So in this kind of cases, the bond which is formed is known as an ionic bond or something known as an electrovalent bond. See, don't get confused. Ionic bond and electrovalent bond are the same things. They take place whenever one element gives its atom to the other, one element gives its electron to the other element to achieve its stable state. डायग्राम में देख लो, क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन कम था यहाँ पे. पोटेशियम had 1 extra electron. Potassium gave it to chlorine. Potassium loses 1 electron and transfers 1 electron to chlorine. ठीक है. उससे क्या हुआ? पोटेशियम का 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया. पोटेशियम एक्वायर्स 1 पॉजिटिव चार्ज. क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया. क्लोरीन एक्वायर्स 1 नेगेटिव चार्ज, सिंगल नेगेटिव चार्ज.
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वन एलिमेंट इज कंप्लीटली लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, the other element is completely gaining the electron. So what is happening in this case, what is happening in this case is कि कोई शेयरिंग नहीं हो रहा है. शेयरिंग के केस में यू हैव द कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, जैसे कार्बन में होता है, हाइड्रोकार्बन में होता है, बट यहाँ पे शेयरिंग तो हो नहीं रहा है. तो शेयरिंग अगर हो नहीं रहा है तो ये कोवेलेंट है नहीं. अगर इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो चुका है एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ प्रॉपर चार्ज, इन दैट केस इट इज नोन एज एन आयनिक बॉन्ड और एन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. सो हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है ऑप्शन ए, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. Now, what is the similarity between sodium atom and sodium ion? ठीक है, what is the similarity between sodium atom and sodium ion? This is sodium atom, this is sodium atom, Na, ठीक है. It has the same number of electrons and protons, क्योंकि कोई निकला नहीं है, कोई अंदर घुसा नहीं है, and it has certain number of neutrons also. Now, and this is the sodium ion, Na plus. Why Na plus? Because sodium ion has given away one electron to somebody, and because of that it has one extra positive charge. ठीक है, now protons are more than electrons in itself. ठीक है, now sodium atom and sodium ion, are they chemically identical? No, they are not chemically identical. How? Because this is neutral in nature and this is carrying a positive charge. They cannot be chemically identical. So chemically identical. Option B, they contain the same number of protons. Yes, they contain the same number of protons. देखो, इसका पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये नहीं कि इसने बाहर से प्रोटॉन ले लिया है. इसका पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा इसलिए है बिकॉज इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दिया है. मान लो कि कहीं पे पहले 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन थे. अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी को मैंने दे दिया मान लो, तो मेरे पास 9 इलेक्ट्रॉन बचे, 10 प्रोटॉन बचे, एक प्रोटॉन ज्यादा है तो एक एक्सेस एक्स्ट्रा चार्ज होगा. सो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल रिमेन सेम. प्रोटॉन्स आर नेवर गिवन अवे. कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नो, इसका इसमें तो न्यूट्रल है, सारा इलेक्ट्रॉन सेम है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर इसमें सेम है, और इसमें देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज. व्हाट डज इट मीन? एटम में एवरीथिंग इज सेम, द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, बट इन द आयन, why has it been ionized in the first place? It has been ionized in the first place because of one reason only, which is that कि इसका जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है वहां से एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया है, वो निकल गया है कहीं पे, इसलिए इसके पास एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है. So the number of electrons can also not be same, and they form covalent bond. No, sodium does not form covalent bonds. ऐसा ionic ये वाला जो है ये फिर भी it can form a covalent bond with maybe carboxylic acid or something, but an atom, why will it form a bond? So this is not possible. And anyways, the sodium ion and the sodium atom together, they do not form any kind of bonds. So this is no covalent bond to hai nahi. This is wrong. So the correct answer is option B. Both sodium atom and sodium ion have the same number of protons. Why? Even though it has a positive charge, it means that it has lost one electron, not gained a proton. Proton cannot be gained क्योंकि protons न्यूक्लियस के अंदर होता है. प्रोटॉन हमेशा न्यूक्लियस के अंदर होता है. नाउ लेट्स कम टू बायो. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट इनसाइड द सेल, in the human body we have the cells. ठीक है, cell, what is cell? Cell can be defined as the basic unit of life. Cell can be defined as the basic unit of life. Cell is known as the basic unit of life. ठीक है, okay. Now inside the cell energy is stored. So the question is, energy is stored in the form of what inside the cell? So the correct answer is, inside the cell energy is formed in the form of a substance known as ATP. The correct answer is option C, ATP. What is ATP? ATP's full form is adenosine triphosphate. Adenosine triphosphate. ठीक है,
adenosine triphosphate is the full form of ATP, and inside the cell, whatever energy the cell has to use for its metabolism, for its working, that energy is used in the form of ATP. That energy is also stored in the form of ATP. What is ATP? Adenosine triphosphate. Correct answer is option C. देख लो होता क्या है, ये हमारा सेल है, ठीक है, एंड सेल हैज डिफरेंट ऑर्गेनेलीज. व्हाट आर द ऑर्गेनेलीज ऑफ सेल? ऑर्गेनेलीज का मतलब होता है सर्टेन पार्ट्स ऑफ द सेल, ठीक है. उन ऑर्गेनेलीज में से एक ऑर्गेनेल होता है known as the endoplasmic reticulum or the ER, ठीक है. दिस पर्टिकुलर थिंग, ये जो बड़ा करके लिखा है यहाँ पे सेल से, दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ अ सेल, ठीक है. अब within this endoplasmic reticulum what happens is that the formation of ATP takes place. I'll show you. See, होता क्या है, you guys must have read about glycolysis in botany, कि जब प्लांट्स का रेस्पिरेशन होता है तो फर्स्टली ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस, ठीक है. अब ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज इज चेंज्ड इनटू पायरुविक एसिड, ठीक है. एंड पायरुविक एसिड से क्या फॉर्म होता है? एटीपी. पायरुविक एसिड से फॉर्म होता है एटीपी, ठीक है. अब उसके बाद जो ये पायरुविक एसिड फॉर्म हुआ, पायरुविक एसिड गोज थ्रू समथिंग एल्स नोन एज क्रेब्स साइकिल, ठीक है. अभी जो ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस इज हैपनिंग विद इन द सेल प्लाज्मा ऑफ द सेल ओनली. वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर ही हो रहा है, ठीक है. बट ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद जो पायरुविक एसिड फॉर्म होगा ग्लूकोज ब्रेकडाउन होके, उसका एक बाय प्रोडक्ट होगा एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है. फिर वो पायरुविक एसिड जो फॉर्म होगा, द पायरुविक एसिड विल देन अंडरगो द क्रेब्स साइकिल, and this Krebs cycle will take place inside this thing known not the endoplasmic reticulum, it will take inside this thing known as the mitochondria, ठीक है. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, pardon me for the mistake, it is not the endoplasmic reticulum, it is known as the mitochondria. Mitochondria is also known as the powerhouse of the cell. Why is it known as the powerhouse of the cell? It is known as the powerhouse of the cell because it stores the ATP. ATP क्या है? ATP, we have studied that ATP is the energy currency of the cell. अगर सेल को कोई काम करना है, cell wants to metabolize some kind of chemical, cell wants to carry out some kind of operation, then cell को क्या चाहिए होगा? एनर्जी चाहिए होगा ना. बिना एनर्जी के आप कोई काम कर सकते हो क्या? You cannot do any work without energy. So the cell derives its energy from something known as the ATP, and the energy of the cell is also stored in the ATP. और ये एटीपी स्टोर कहाँ होता है? एटीपी इज स्टोर्ड इनसाइड अ सेल ऑर्गेनेली. सेल ऑर्गेनेली क्या होता है? सेल ऑर्गेनेली मींस ऑर्गेनेलीज आर पार्ट, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल इनसाइड द सेल, ठीक है. सो वन ऑफ दिस ऑर्गेनेलीज इज द माइटोकॉन्ड्रिया, और सिंस माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी स्टोर होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है द पावर हाउस ऑफ द सेल. नाउ पहले क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर सेल के प्लाज्मा में ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस. ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज टूट के पायरुविक एसिड बनेगा, उसका एक उस रिएक्शन का बाय प्रोडक्ट होगा एटीपी. आफ्टर दैट द पायरुविक एसिड विल बी यूज्ड इन द क्रेब्स साइकिल. क्रेब्स साइकिल विल टेक प्लेस विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है. अब क्रेब्स साइकिल होने के बाद क्रेब्स साइकिल के जो प्रोडक्ट्स है, दे विल गो थ्रू समथिंग नोन एज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और द ईटीसी, ठीक है. इन तीनों स्टेप्स में एटीपी विल बी फॉर्म्ड एज अ बाय प्रोडक्ट डिफरेंटली, और ये जितना भी एटीपी फॉर्म होगा, दिस एटीपी इज स्टोर्ड इन द माइटोकॉन्ड्रिया, which is why mitochondria is known as the powerhouse of the cell. जब भी सेल को जरूरत होगा, माइटोकॉन्ड्रिया से एटीपी का एनर्जी यूज करके द सेल विल डू इट्स वर्क. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज which organs secrete bile? The correct answer to this is option A, liver. Whenever we eat food, whenever the food is getting digested, होता क्या है, फूड में जो फैट्स है, फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए द फैट्स हैव टू बी फर्स्ट इमल्सिफाइड, ठीक है. इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट एक्चुअली होता क्या है, जो डिटर्जेंट का एक्शन होता है ना ऑर्गेनिक वेस्ट पे, कपड़ों पे, ठीक है, जो डर्ट होता है, ऑयली डर्ट होता है, उस पे डिटर्जेंट का जो एक्शन होता है, दैट इज ओनली व्हाट हैपेंस इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट. अब इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में क्या होता है, बेसिकली उस फैट को एक सिंपलर फॉर्म में ले आया जाता है, सो दैट द फैट कैन बी इजीली डाइजेस्टेड बाय द एंजाइम्स इन द इंटेस्टाइन एंड पेनक्रियास, ठीक है. अभी देखो हो क्या रहा है यहाँ पे,
See, bile does not help in digestion of fats. Do not confuse it that way. Bile juice does not in any manner help, help कह रहा, in any manner it does not digest the fat. फैट को डाइजेस्ट करने के लिए वी हैव एंजाइम्स नोन एज लाइपेजेस, ठीक है, इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, बट bile does not digest the fat. Bile will only emulsify the fats so that they can be later on digested by the lipases. Now ये bile secrete कहां से होता है? Bile is secreted by the liver in our stomach. देखो ये liver है हमारा, ठीक है, the food will come through here, the food will come here, the food will pass through this place, ठीक है। अभी होता क्या है, the liver will secrete bile and this bile will pass through something known as the biliary duct, ठीक है। This pipe is known as the biliary or biliary duct, ठीक है। इस डक्ट में बाइल जूस सिक्रेट होकर निकलेगा, निकल के द बाइल विल बी स्टोर्ड इन द गॉल ब्लडर टिल वी डोंट ईट द फूड, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम हमेशा खाना खाते रहेंगे। When we are not eating and the liver is secreting bile, the bile is stored in the gallbladder. जैसे ही we will eat the food, the gallbladder will release the bile juice into the biliary duct, and यहाँ पे at this point, as you can see, यहाँ पे the bile juice will get released and it will get mixed up with the food, and in the food whatever fat is there, the bile will emulsify the fat so that later on when the fat reaches the intestine, it can be easily broken down and digested by lipases. What are the enzymes called that digest fat? They are known as lipases. Now, this is the very easy question. What is the basic unit of life called? I just told you a while ago. The basic unit of life is known as the cell. The cells that we have, a cell is known as the basic unit of life. Look at this, these two diagrams, they are of a plant cell and animal cell. देखो, अब सेल में क्या होता है, the difference between अब सेल में क्या होता है, देखो, सेल में you have the interior of the cell, ठीक है, the cell is separated from the outside environment by something known as the plasma membrane or the cell membrane. The plasma membrane or the cell membrane, it will separate the cell from the outer part, external area of the cell, cell के बाहर जो भी है उससे, ठीक है, and within the cell we have something known as the nucleus. The nucleus in the center is the control center of the cell, ठीक है, and we have the cytoplasm. What is the cytoplasm? Cytoplasm is nothing but it's like liquid a liquid inside the cell on which all the organelles or the organs of the cell, the parts of the cell are floating. अब उस cytoplasm में different organelles or parts of the cell are floating. What are they? Smooth endoplasmic reticulum, the lysosomes, the centriole, ribosomes, mitochondria, rough endoplasmic reticulum, and many others. Now, the nucleus also, the nucleus is separated from the cytoplasm by something known as the nuclear envelope or the nuclear membrane. Okay? Now, this is the structure of an animal cell. Okay? They have some kind of difference with the plant cell. See, animal cell में क्या था? Animal cell में you had the cell. Animal cell में you had the cell. Inside it you had the nucleus. The nucleus was separated from the cytoplasm by the nuclear membrane. Yeah, the nuclear membrane. And the cell had something known as the plasma membrane. This boundary of cell is the plasma membrane to separate it from the external environment. But in case of the plant cell, there are even more differences. क्या होता है कि outside the plasma membrane, the plant cell has an additional covering known as the cell wall. ये plasma membrane है अंदर, देखो ये अंदर वाला ये plasma membrane है plant cell का, and outside that it has another extra covering C known as the cell wall. ठीक है, so double layering होता है plant cell में. And other than that, there are certain organelles. Organelles means the parts of cell which plant cells have but animal cells do not. For example,
Plastids are something which are only present in plant cells and they are not present in animal cells. एंड जैसे सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता. एंड व्हाट इज अ सेल? A cell is the basic unit of our life. Now, look at the next question. It says, एक आदमी को ब्लड चाहिए. Which of the following blood groups can be transfused to a person whose blood group is A? ठीक है, एक A ब्लड ग्रुप का आदमी है, ठीक है, उसको ब्लड देना है. So which blood will be suitable for that person? ठीक है, which blood group will be suitable for that person? Now let's look at this question. See, देखो, अगर ब्लड ग्रुप किसी का A है, look at this table. Different blood groups have a different antigen on their surface and they have a different antibody in their serum. ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हम डिसाइड करते हैं कि किसके लिए कौन सा सुटेबल है और सुटेबल नहीं है. एंड दे हैव सम जीनोटाइप आल्सो, जो पेरेंट्स से आता है उसी से तो ब्लड ग्रुप बनता है ना. अब जो ब्लड है, ब्लड ग्रुप में वी हैव समथिंग नोन एज कोडोमिनेंस. दूसरे जगह पे क्या होता है, एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक ही डोमिनेट करता है. मान लो both the parents have given two different characteristics to the child which is tall height, short height. ठीक है, अब दोनों में से one will be dominant and the child will become either tall or short on basis of that. ठीक है, but यहाँ पे चीज अलग है. ब्लड में क्या होता है, देयर इज कोडोमिनेंस. कोडोमिनेंस मींस मतलब दोनों साथ में डोमिनेंट होते हैं एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्रेस ईच अदर. In the ABO blood grouping, both A and B are dominant traits and O is a recessive trait. तो होता क्या है, अगर दोनों पेरेंट्स से A और B साथ में आ जाए तो A और B दोनों साथ में विजिबल होते हैं एंड हेंस द ब्लड ग्रुप ऑफ द पर्सन बिकम्स AB. ठीक है, अब ब्लड ग्रुप ए कब होगा? ए वो तब होगा जब दोनों पेरेंट्स से ए और ए आएगा. दोनों पेरेंट्स से देयर विल बी ए एंड ए और देयर विल बी ए एंड ओ. होगा क्या, ओ विल बी रिसेसिव एंड ए विल एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द बॉडी एंड द ब्लड ग्रुप विल बी ए. ठीक है, अभी देखो ए पर्सन का ब्लड ग्रुप पूछा है, तो ए पर्सन के पास एंटीजन है ए एंड एंटीबॉडी है बी. ठीक है, तो द सेम टाइप ऑफ ब्लड, एक तो है कि जिसका ब्लड ए है वो दूसरे ए को दे पाएगा, वो तो कॉमन सेंस. ठीक है, बिकॉज अनदर पर्सन हैविंग ए ब्लड ग्रुप विल हैव एंटीजन ए एंड एंटीबॉडी बी. ठीक है, एंड इट कैन इजीली बी डोनेटेड टू अनदर ए. नाउ लुक एट द अदर ब्लड ग्रुप्स. बी का देखो, बी हैज अ डिफरेंट एंटीजन एंड अ डिफरेंट एंटीबॉडी. यू कैन नॉट गिव इट टू समवन विद एन ए ब्लड ग्रुप. व्हाई? बिकॉज इट माइट हैव एन एडवर्स इफेक्ट, वो ब्लड को रिजेक्ट कर देगा. ठीक है, on the other hand AB has both antigens. ठीक है, अब B एंटीजन भी है AB में. ठीक है, अब A ब्लड ग्रुप के पास हैज ओनली A एंटीजन, वहां पे B एंटीजन डाल देंगे तो वो फिर से रिजेक्ट हो जाएगा. ठीक है, बट इन केस ऑफ O डज नॉट हैव एनी एंटीजेंस. तो अगर O को मैं डाल भी दूं A में तो कोई एंटीजन तो है नहीं, उसको उसको कौन रिजेक्ट करेगा? रिजेक्ट करना कुछ है ही नहीं O में. So O is a blood group which you can donate to A as well. O, there is a saying that O is a universal donor. O blood group people are universal donor. Why? Because O वाले किसी को भी blood donate कर सकते हैं and AB blood group वाले they are known as universal recipients. Why? Because they can take blood from anyone. they. ठीक है? So as a result of that, what we can say is that a person with A blood group can get blood from someone with a blood group of A also and someone from a blood group of O also. B and AB they cannot take because of the difference in antigens. So what is the correct answer that we are getting here? What is the correct answer that we are getting here? The correct answer that we are getting here is that a person with blood group A can be transfused with both blood group O and blood group A. The answer is option D, both A and B. Okay, now the next question is, which part of the body is affected by the hepatitis B virus? See, we all know that hepatitis B causes jaundice. ठीक है, और jaundice क्या है? Jaundice is a condition of the liver
जहाँ substances like bilirubin, biliverdin, they go sky high, बहुत अमाउंट बढ़ जाता है उनका, ठीक है। तो कॉमन सेंस से व्हाट इज द part of the body which is affected by the hepatitis B virus? Hepatitis B affects the liver of the body, ठीक है। hepatitis B affects the liver of the body, ठीक है। ये देखो, the hepatitis B virus, what happens is that it affects the liver, it is transmitted through blood or body fluids, and it causes liver inflammation and it can damage the liver permanently also if it is not treated. Symptoms क्या है? One of the biggest symptoms is jaundice. Jaundice होता कहाँ है? Jaundice हमेशा liver से होता है। So hepatitis B is a virus which causes jaundice as a symptom, and which part of the body it affects? It affects the liver. Now, the next question is, what is the possibility of hereditary variations? When is it greatest? And the possibility of hereditary variations is greatest when organisms reproduce through which of the following methods? Now see, hereditary and variations. Let's look at the meaning of these two words separately first. Okay? Hereditary means that something which you have inherited from your parents. Hereditary means something which the offspring has inherited from parents. ठीक है, that is hereditary. And variation means changes. ठीक है. Now hereditary variations combined, what does it mean? It means that in which case the offspring of the parent will have some changes with comparison to the parent, and it will inherit the changes from the parent only. ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक ऑफस्प्रिंग है, hereditary variation means that the offspring inherits some kind of changes in its body from its parent. Now when is it possible? In case of asexual reproduction there is only one parent. Asexual reproduction में there is only one parent. अब अगर एक ही पेरेंट का बच्चा हो रहा है, दूसरा पेरेंट इन्वॉल्व ही नहीं है, then how can there be a variation in the child? If only one parent is giving birth to a baby, then the baby will be same as that one parent only. दूसरा पेरेंट का तो इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, है ना। उसका शक्ल, सर, दिमाग, हाथ पैर, स्किन कलर, हाइट, एवरीथिंग विल बी सेम एज द पेरेंट ओनली। बट और अब आता है बाइनरी फिजन एंड बडिंग। सी बाइनरी फिजन मींस कि ब्रेक डाउन इनटू टू पार्ट्स, दैट इज नोन एज बाइनरी फिजन। एंड देन यू हैव बडिंग। बडिंग मींस कि मान लो एक प्लांट है, ठीक है, प्लांट से सम एक्स्ट्रा बर्ड्स दे ग्रो आउट, and after some time these buds fall down and they grow into a fully grown plant, ठीक है। This is known as budding. So now see, budding and binary fission are kind of types of asexual reproduction only. Why? Because there is no involvement of a second parent. एक parent अकेला ही reproduce कर रहा है, और एक parent अकेला reproduce करने से क्या होता है, वो exactly same होगा मम्मी पापा से, कोई variation होगा ही नहीं। मम्मी पापा क्या, उसका एक ही parent है, मम्मी पापा का concept ही नहीं है उसका। But in case of sexual reproduction, for example in humans, we have two parents, there is sexual reproduction, we have two parents, ठीक है, we have two parents। होता क्या है, since if you are the child of two parents, होता क्या है, you have some characteristics from both of your parents। आप सेम अपने पापा जैसे नहीं दिखते हो, या फिर सेम आप अपने मम्मी जैसे नहीं दिखते हो। योर फेस, योर बॉडी स्ट्रक्चर, एवरीथिंग इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ। why is it so? This is so because there is sexual reproduction, there is an involvement of two parents. When two parents are involved, the child inherits the characteristics of both the parents, and then as a result it will come up with some variations from its original parental characteristics, okay? So the correct answer in this case is that the possibility of hereditary variations is greatest when organisms reproduce sexually. Why? Because there are two parents, दोनों parents का characteristic मिलके the final offspring that comes, he has a different characteristics from both his
पेरेंट्स, वो दोनों जैसा किसी के साथ भी एग्जैक्टली सेम नहीं होता, दोनों से अलग होता है थोड़ा, लेकिन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें होते हैं। नाउ व्हाट इज हीमोफीलिया? ठीक है, सी, हीमोफीलिया, I'll tell you what the disease is first. What happens in a normal human being? मान लो you have your blood vessels in the hand, कुछ काम करते करते आपका हाथ कट गया, ठीक है, थोड़ा देर बाद क्या होगा, देयर विल बी अ कट, you will start bleeding, but in some time clotting will take place and the bleeding will stop. Blood clotting हो जाएगा, bleeding will stop, ठीक है. But what happens in a person with hemophilia? In a person with hemophilia, the problem that occurs is that कि मान लो आपका blood vessel है, आपको hemophilia है, ठीक है, आपका blood vessel है, आपका हाथ कट गया अचानक से, काम करते करते कुछ करते करते आपका हाथ कट गया, तो हीमोफीलिया करने से क्या होगा कि होने से क्या होगा कि आप क्लॉटिंग नहीं हो पाएगा. In normal blood cells, bleeding stops due to clotting, but in a hemophilic person suffering from hemophilia, look at the diagram, the hemorrhage took place, the bleeding took place, but in a healthy cell, the clotting took place and the bleeding stopped. ठीक है? But in case of a person with hemophilia, a normal blood cell had an hemorrhage, a normal blood cell had an hemorrhage, कट गया उसका, bleeding हो रहा है, उसके बाद क्या हुआ, उसको हीमोफीलिया था, so because of that the clotting could not take place and the bleeding is still going on. The clotting is either very delayed or it does not occur at all. It is very delayed. Okay? Now the question is that what kind of disease is hemophilia? Is it a genetic disease, metabolic disease, communicable disease, all of these? Now see, what is the difference between these three kind of diseases? Metabolic disease means कि आपके बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ठीक है, अगर आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म में कोई, मेटाबॉलिज्म मतलब क्या है, आपके बॉडी में अलग अलग प्रोसेसेस हो रहे हैं, सिंपलर सब्सटेंसेस आर ब्रेकिंग डाउन, कंबाइनिंग इनटू कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, complex substances are breaking down into simpler substances in your body, different things are going on, so this is the metabolism of the body. अगर ऐसा कोई डिजीज होता है जिससे कि आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को हार्म पहुंचे, तो वो होगा एक मेटाबॉलिक डिजीज, ठीक है, या फिर मेटाबॉलिज्म के कारण से कोई डिजीज हो जाए आपको, that will be a metabolic disease, ठीक है. On the other hand, communicable disease means कि मेरे को एक बीमारी हुआ है, but if I touch another person, the disease may get transferred to that person. For example, the diseases which are spread by germs. मेरे को मान लो chicken pox हो गया, I went to meet someone, I did a handshake with that person, now the chicken pox virus got transferred to that person, now he is also suffering. Or the best example is our recent disease that we had is COVID, communicable disease, it can spread from one person to another, ठीक है. On the other hand, we have genetic diseases. Genetic disease का मतलब होता है if there is any disease which you have inherited from your parents in the genes, that is known as a genetic disease. Now, hemophilia does not happen due to metabolic problems or it cannot be transferred from one person to another. It is not communicable. Hemophilia happens only when there is a problem in the inheritance of genes from the parents. Okay? So this is why the correct answer is that hemophilia is a genetic disease. It is a genetic disorder. Or hemophilia, एक और नाम है, it is also known as the royal bleeders disease. Why? Because the royal family of England, they have a tradition of inbreeding. They usually marry within their family only. So उससे क्या होता है, this disease, because of this particular practice in the royal British family, hemophilia has become a kind of a prevalent disease in their family. And I think Queen Victoria also, I think, had this disease. So yeah, this is another fact about hemophilia. Hemophilia is also known as a royal bleeders disease. It is the it is known as that way because it is a genetic disorder. The Britain royal family में यही होता है कि वो family के अंदर ही शादी करते थे. Because of that, some genetic anomalies occur, and because of that, the genetic disease happens, which is known as hemophilia. हाथ वाथ कटने से, हाथ पैर कुछ भी कटने से bleeding easily रुकता नहीं है, clotting होता नहीं, ठीक है. Now, what is the basic unit of protein known as? See, proteins, carbohydrates, and fats. Okay? All three of these are long chain polymers. Polymers मतलब होता है a long chain of certain chemical particle. ठीक है? और उसका जो single units होता है,
those single basic units are known as monomers of the polymers. ठीक है, मान लो एक पूरा चेन है, एक केमिकल है कोई एक्स, ठीक है, ये एक्स का एक बहुत बड़ा चेन है, ठीक है, सो दिस होल थिंग विल बी नोन एज अ पॉलीमर, ठीक है, और ये जो एक एक्स है, दिस वन पार्ट ऑफ द पॉलीमर विल बी नोन एज अ मोनोमर, ठीक है। व्हाट इज अ मोनोमर? अ मोनोमर इज अ बेसिक यूनिट ऑफ द पॉलीमर, ठीक है, इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ द पॉलीमर, ठीक है। अब प्रोटीन भी एक पॉलीमर है, ठीक है, इट इज अ लॉन्ग चेन ऑफ समथिंग, ठीक है। अब वही पूछा है व्हाट इज दैट समथिंग, द व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन? द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन इज समथिंग नोन एज अमाइनो एसिड्स। बहुत सारे अमाइनो एसिड्स दे गेट टुगेदर, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स दे फॉर्म टुगेदर, दे जॉइन टुगेदर एंड दे फॉर्म अ लॉन्ग चेन व्हिच इज नोन एज प्रोटीन, ठीक है। अभी अमाइनो एसिड होता क्या है? सी अमाइनो एसिड इज दिस काइंड ऑफ अ केमिकल ग्रुप, ठीक है, ये पूरा चीज एक अमाइनो एसिड है, दिस इज वन वन अमाइनो एसिड, ठीक है, देयर इज वन कार्बन इन द सेंटर, ठीक है, उसके साथ यू हैव वन हाइड्रोजन, along with that there is a carboxylic group COOH, ठीक है, and along with this carbon there is an amino group which is an NH2 group, ठीक है, and this is the and this particular central carbon it has a side chain also known as R. अभी R के जगह पे कोई भी केमिकल हो सकता है, depending on the what is there in place of R, we will know that what kind of amino acid it is. अमाइनो एसिड बहुत सारे हैं, बहुत टाइप के अमाइनो एसिड्स हैं, ये तो कॉमन है सारे अमाइनो एसिड्स में, देयर इज दिस वन कार्बन हियर विद द हाइड्रोजन, देयर इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड COOH and there is an amino group NH2, बट ऑन डिपेंडिंग ऑन कि R के जगह में क्या होता है, वी डिटरमाइन व्हाट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड इट इज। तो ये पूरा चीज दिस इज वन सिंगल अमाइनो एसिड, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे अमाइनो एसिड दे विल गेट टुगेदर, दे विल फॉर्म टुगेदर, and as a result of this they will form something known as a long chain of amino acids, and this long chain of amino acids will be known as the protein. Hence the basic unit of protein is amino acid. Similarly for carbohydrates the basic units are known as monosaccharides, and for uh, fats the basic units are either known as monoglycerides or fatty acids. Now the next question, what are enzymes made up of? Now what are enzymes? Enzymes are biological catalysts. See, while discussing the chemistry PYQs, I had told you that what are catalysts? Catalysts are certain chemicals or substances which speed up the chemical reaction. मान लो कोई chemical reaction 10 मिनट में हो रहा है, उसमें catalyst डाल दोगे वो reaction 5 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। Now, enzyme is a special type of catalyst. Why? Because enzyme is a biological catalyst. बायोलॉजी क्या होता है? बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ, ठीक है। सो अगर कोई भी बायोलॉजिकल फील्ड में कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ, हमारे बॉडी में भी तो केमिकल रिएक्शन ही हो रहे हैं, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, यूरिनेशन, वॉट एवर वी आर डूइंग, एक्सक्रीशन, एवरीथिंग इज अ काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन ओनली, ठीक है। तो ये जो केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में हो रहे हैं, या मान लो किसी प्लांट में केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, these chemical reactions are biological chemical reactions, ठीक है। So in biological chemical reactions if any kind of catalysts are used, those biological catalysts are known as enzymes. So all enzymes are catalysts but all catalysts are not enzymes. Why? Because enzymes क्या है? Enzymes they are fastening up biological reactions, so all of them are catalysts, but all catalysts might not be used in biological reactions, some might be used in inorganic reactions as well, है ना। So enzymes are nothing but biological catalysts which speed up biological reactions. Now what are enzymes made of? Enzymes are made of proteins. Always remember this fact, enzymes are made of proteins, which is why if anybody ever does a higher studies in biology, maybe enzymology or biotech or microbiome or whatever, ठीक है, zoology, botany, whatever, you will see that whenever you are in the lab, you are ever doing or studying the working of an enzyme, it is always done through a protein assay, ठीक है। Why is it done through a protein assay? It is done using something known as DSA, I think,
it's a protein. So why is it done using a protein assay? Because enzyme is a protein. So if you have to study an enzyme, you have to study it like a protein. So the answer is all enzymes are made up of proteins. Now, the next question is that when our blood circulation is taking place in the body, ठीक है, we know our heart is divided into certain parts, ठीक है, ये मान लो हमारा heart है, it has 4 chambers, ठीक है, the upper chambers, they are known as the auricles or atria, and the lower chambers are known as the ventricles, ठीक है, this is the left auricle, this is the auricles, this is the ventricles, auricles or atrium, sorry. This is the heart, these are the 4 chambers, these upper 2 chambers are known as auricles or atrium, and the lower chambers are known as ventricles, ठीक है. This is the left auricle, this is the right auricle, this is the left ventricle, this is the right ventricle. Now we all know that the right side always has the impure blood or the deoxygenated blood, the blood without oxygen, that is always present on the right side, ठीक है. And oxygenated blood is always present on the left side of the body, ठीक है. Pure blood or oxygenated blood is always present on the left side of the heart, and impure blood or deoxygenated blood is always present in the right side of the heart. तो देखो ऑप्शन से ये दोनों ऑप्शंस, एंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, into which part of the heart oxygenated blood is poured, ठीक है. Since we are talking about oxygenated blood, right ventricle and right auricle are already subtracted. Why? Because right side only has the impure or deoxygenated blood, oxygenated blood का सवाल ही नहीं उठता है. Now let's come to the left auricle and left ventricle. Now see, होता क्या है, always remember, whenever blood is deposited into the heart, जब भी ब्लड हार्ट के अंदर डाला जाता है वो हमेशा ऊपर से डाला जाएगा ऐसे, ठीक है. और जब भी ब्लड हार्ट से निकलेगा, whenever it is poured out of the heart, the blood is always poured out from the bottom of the heart, ठीक है. तो हमेशा याद रखना, ब्लड जब भी हार्ट में घुसता है ऊपर से घुसता है, और जब निकलता है तो नीचे से निकलता है. Always remember this thumb rule, and that right side always has impure or deoxygenated blood, left side always has pure or oxygenated blood. Always remember this please. So अभी हो क्या रहा है, यहाँ बोल रहा है कि into which part of the heart oxygenated blood is poured in, उसको अंदर pour किया जा रहा है, ठीक है, अंदर डाला जा रहा है. तो अभी देखो oxygenated है, ठीक है, let's break it into two parts, oxygenated and poured in, ठीक है. First look at oxygenated. Oxygenated का मतलब है it is on the left side, ठीक है, मतलब राइट साइड पूरा माइनस हो गया, राइट साइड में तो डीऑक्सीजनेटेड होगा, माइनस हो गया. नाउ अभी देखना इट इज पोर्ड इन और पोर्ड आउट. यहाँ पे लिखा है इट इज पोर्ड इन, इनटू व्हिच पार्ट इट इज पोर्ड इन. पोर्ड इन है मतलब ये ऊपर से जा रहा है, ऊपर वाले चेंबर में है. ऊपर वाला चेंबर क्या है, ऑरिकल है, और कौन सा साइड है, ऑक्सीजनेटेड है तो लेफ्ट है. सो द आंसर इज ऑप्शन बी, लेफ्ट ऑरिकल. आई विल शो यू अ डायग्राम ऑफ द हार्ट. सी, दिस इज द हार्ट, this is the left auricle or left atrium, this is the right auricle or right atrium. नीचे we have the ventricles, left ventricle and right ventricle. तो होता क्या है, जब भी ब्लड पंप होगा, ठीक है, इट इज पंप्ड आउट फ्रॉम द वेंट्रिकल, बट जब ब्लड अंदर घुसेगा तो वो ऑरिकल से घुसेगा. अभी देखो, इफ आई टॉक अबाउट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इम्प्योर ब्लड, वो राइट साइड में आता है. हमारे सवाल में उसका अभी जरूरत है नहीं, हमारे सवाल में हमको ऑक्सीजनेटेड ब्लड का चाहिए, वो लेफ्ट साइड में आएगा. एंड सिंस वो अंदर आ रहा है तो वो ऊपर से आएगा, ऊपर से इट विल कम टू द लेफ्ट ऑरिकल और द लेफ्ट अपर चेम्बर. सो दिस इज इट
for the PYQ session for today. I hope it was helpful for you. Whenever you don't understand anything, please rewatch that particular part again. और जहाँ जहाँ especially numericals में please keep the speed a bit lower than 1x so that you properly understand the questions and how I did the answers, how I solved the answers. And please rewind the videos as many times as you need till your concepts are crystal clear to you. ठीक है? Also, please practice similar topics and questions from similar topics on your own as well. क्योंकि अगर मेरे PYQs बस देखोगे तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला. It will only give you the idea कि क्या आने वाला है. After this, you just need to practice all these PYQs once again, all by yourself, so that you're well versed with all the topics. Please go through all the topics that I have discussed. These are important topics, and I hope that it helps you in your exam. Thank you, everyone.